Dear students, we can divide the process of metabolism into two major categories. This is not a very discrete categorization, but it helps to understand the process of metabolism. So, आप इसको दो major categories में divide कर सकते हैं. If you have been listening to me in previous topics, so then these terms should be very familiar to you. One is the catabolism, the breaking down of food, the breaking down of molecules. क्यों break down करना है? वो break down the molecules to get energy out of those molecules. The molecules have the energy is contained in their bonds, and we need that energy. We need that energy for whatever we are doing. Even I am moving my hands here, it is because of the energy. And some catabolic, actually all sort of catabolic activities are going on in my body, so that I can move, so that I can talk, so that I can see. This all needs energy, and it is coming out of catabolic reaction. Catabolism के reaction से ये सारी energy मिल रही है. Digestion of food, जैसा कि मैंने कहा कि आप छोटे से छोटे पार्ट में अपन में मुंह में फूड लेते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तकसीम करते हैं, ताकि वक्त है कि वो स्टमक में जाती है, ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनती है, and then all sorts of enzymes act upon it, and after the action of all the sorts of enzymes on it, you get energy because of the catabolic activity. Anabolism is just an opposite, बिल्कुल उसका opposite. In catabolism, you are breaking down the food. In anabolism, you are making the food. You are making the molecules from smaller molecules. You are making the macromolecules from individual units. That is anabolism. Because you are making molecules here, it needs energy. Without energy, you cannot make molecules. So, anabolism is energy investing phenomena. It needs a lot of energy. Again, I am moving here. Of course, my energy is used, but I am moving because I have hands. I am talking because I have tongue. I can see because I have eyes. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मैक्रो मॉलिक्यूल से तो बनी है, ये प्रोटीन से बनी है ना, कार्बोहाइड्रेट से बने हैं स्ट्रक्चर्स, मसल्स आपके मेजर प्रोटीन्स के, तो ये एनाबोलिज्म की वजह से आई हैं. कैटाबॉलिक पाथवेज में ग्लाइकोलिसिस फंडामेंटल पाथवे, क्रेब्स साइकिल फंडामेंटल पाथवे, दे ऑल आर कैटाबॉलिक पाथवेज, दे गिव ट्रेमेंडस एनर्जी. एनाबॉलिक पाथवेज में very intricate but very sophisticated and beautiful process, that is the protein formation, the translation process, which gives rise to the formation of proteins. अमीनो एसिड्स आपस में लगते जाते हैं, प्रोटीन बनती है. तो ये अमल बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टिंग है, एनर्जी डिमांडिंग है. इसी तरह रेप्लिकेशन भी इसी तरह का अमल है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स साथ साथ चलते जाते लगते जाते यू गेट अ मेगा molecule known as DNA. That's coming out of replication process. So, whether replication, whether translation, and many other processes taking in your body, they are anabolic. They need a lot of. Similarly, there is glycogenesis. Glycogen का बनना, gluconeogenesis, ग्लूकोज का बनना, ये प्रोसेस भी ऐसे हैं. लिपोडोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, लिपिड्स का बनना, एक्रोमोलिक्यूल्स का बनना, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी इवन यूनिट्स भी बनने, जैसा कि ग्लूकोज बनती है रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में, या मेगा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लाइकोजन बनता है. अगेन दैट डिमांड्स एनर्जी, एंड दैट्स एनाबॉलिक पाथवे. बट कीप इन माइंड वन थिंग, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म आर नॉट एक्सक्लूसिवली सेपरेट. आई मीन they depend upon each other, they are intertwined with each other. ये आपस में मिले हुए हैं. कैटाबोलिज्म का हम सोच ही नहीं सकते अगर एनाबोलिज्म ना हो रहा हो. एनाबोलिज्म का हम सोच ही नहीं सकते अगर कैटाबोलिज्म ना हो रही हो. बिकॉज फॉर एनाबोलिज्म यू नीड एनर्जी. फ्रॉम वेयर यू विल गेट दैट एनर्जी? यू विल गेट दैट एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ और द कैटाबोलिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द बिगर मॉलिक्यूल्स.
that energy will give rise to anabolism. Similarly, for catabolism, of course, you give energy, but that energy is coming from the hydrolysis of the molecules, from the catabolism of the mega molecules, and that mega molecules are coming from anabolism. So, both are intertwined. For the homeostasis of the cell, for the normal actioning of the cell, these both reaction, catabolism and anabolism, go side by side, and they have to be regulated on many junctures. Finally, keep in mind that you don't have to all the time remember or memorize the names of the molecules which are involved. I am telling you because now we are going into the mechanistic details of the process of metabolism. You don't have to all the time remember the enzyme names and so on and so forth. You should also know the concept behind those. So, in coming lectures, we will be talking about metabolism with more mechanistic details.